Hello guys, welcome to EduTap. Welcome to your Q&A session, Ask Me Anything session related to NABARD Grade A 2022. So I am here as promised with you on time at 6 p.m. So how are you all? Please let me know before we begin the session. I hope you guys have been doing really well. The examination days are actually near. You are very excited as well as also very much apprehensive. कैसे होगी तैयारी, क्या करेंगे? तो सारे questions के आंसर आज हो जाएंगे इस सेशन में, Ask Me Anything session. So first of all, you give me a thumbs up that you can hear me and also tell me how are you doing. Then I'll begin with the session. ठीक है? तो मृणाल, a very good evening. So guys, actually for this session you are going to ask your questions, but we also posted a form, a Google form, so that you guys can submit your queries, and I already have a long list of queries that have to be answered today. So I have plans to answer all those queries as well as taken the queries in between that I get from you guys. ठीक है? तो I hope you guys are doing well, है ना? करें फिर start करें? ठीक है. Great. I am waiting for the answer. How are you all? How have you been? And if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, kar lo. It will be really beneficial to you. Agar you are a new student here, you're watching this lecture for the first time, तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज एंड में सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी. एंड लेट्स नाउ स्टार्ट विद योर क्वेरीज. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग. I'll pick up the queries in between आपसे भी, and I already have a set of queries as I said with me already. ठीक है, so I'll first let me just show you the list I have brought with me of the queries. ठीक है, I already have this list of queries. Yes, so I have the names of the students who posted their query and their respective query. I'll pick one by one, ठीक है, so that all these queries also get answered, and I'll also pick your own queries बीच में जो आती रहेंगी. तो टाइप करते रहना. I'll be keeping a watch on that also. ठीक है. So देखो, very first query that was submitted by Pranab was how many months of current affairs are required for NABARD Grade A 2022 Phase 1, Phase 2? How much static part should we finish before starting current affairs? When should I start giving mocks, and what should be the frequency of mocks? So this question I have marked blue. All the questions that you see blue in my sheet are actually related to current affairs. So I'll try to answer all the current affairs questions together. ठीक है, तो I'll move on to the next query that has been asked. It is related to question pattern and previous year question. So देखो, question pattern and previous year questions, if you need that what has been the previous year paper, then you can find out the PDF of the previous year questions. उसके लिए you have to find a video on our channel which is about the download PYQs. तो वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा effort you will have to put. ठीक है, I'm taking up the next query. Mayank asked, I have 7.35 aggregate equivalent to 66%. I'll put yellow, the one that I'm asking. ठीक है, I have 7.35 aggregate equivalent to 66% according to the formula given by my university. But according to the aggregate, when calculated, comes below 60%. Am I eligible for NABARD Grade A? See, this is a very valid query. You must be having, those of you who got your marks, your result in CGPA, है ना? So if your university gives a criteria to convert the CGPA into percentage, then it is taken by NABARD. It is accepted by NABARD. On the other hand, if there is no such criteria to convert CGPA into percentage, then NABARD has given a criteria. फिर NABARD का criteria will be applicable. So in this case, Mayank, if you are in the session हो तो hand raise कर देना, ठीक है? If you are here तो please raise your hand. I'll like मुझे मिल जाएगा कि अच्छा आप यहाँ पर हो दिख गए हो. तो if your criteria says that according to the conversion you are getting 66%, so you are very much eligible. The criteria given by your university is accepted by NABARD. ठीक है, तो 66% वाला है, आप हो eligible, right? अभी next question लेते हैं. Ankit has a question. I am currently pursuing masters in fisheries. देखो, question you will have to put बीच में. See, session I think is going well. बीच में कुछ अगर error है तो let me know. From my end it's going fine.
ठीक चल रहा है? इज इट फाइन नाउ? Please let me know, is it fine now? Okay, I think there was some error, but it should be working as of now. It's working. I have checked it on my own screen. ठीक है, चलो let's get started then again. You please post your queries, ठीक है, बीच में डालते रहो. Don't like put your query एक ही साथ में. ऐसे मत करो that you first tell I am doing this, then you wait, बहुत सारी chats आ जाएंगी and then you post your query. You put your question directly. I'll pick it up from there itself. Okay, so Madhusudan has a question which is pertaining to this only. Ma'am, can NABARD change its educational qualification for grade A? There is less chance of it that they will change their education qualification. ठीक है, usually what they change is the percentage, you know, the eligibility. इतना आपको आया होना चाहिए marks अपने graduation में या post graduation में. तो that was changed 2021 में. अभी होने का chances are really less. ठीक है, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Akhila has asked, hi ma'am, will there be day-wise classes and study plan as it was in case for SEBI and RBI? So Akhila, yes, we plan to obviously come up with a detailed study plan. जैसे आपके लिए हमेशा classes we try to present the marathon classes for the examination phase 1 से पहले and then before phase 2. So yes, we do plan to come up with it. But for that you'll have to wait notification के लिए और तब तक you have to prepare your own. ठीक है. क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे हो सकता है जो आ रहा है ना बार बार, इसके लिए आई वुड वांट टू टेल यू, यू मस्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इफ यू हैवंट सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस येट, यू कैन गो टू अवर चैनल ओनली. बाद में इस सेशन के बाद चले जाना, वहाँ पे देयर इज अ वीडियो ऑन हाउ टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वो कर लो, आपको बहुत फायदा होगा. ऑल द क्वेश्चंस आर मेड बाय अस, आपके लिए क्यूरेट किए गए हैं. ठीक है, फाइन, ठीक है. तो आई टेक नेक्स्ट क्वेरी. यादविंदर हैज आस्क्ड फॉर बेस्ट डिस्काउंट ऑफर्स. तो अभी तो चल रहा है बेस्ट डिस्काउंट ऑफर ऑन नाबार्ड कोर्स. आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे जाके देखो. राइट, सो करंटली वी आर ऑफरिंग अ गुड डिस्काउंट एंड यू कैन मेक अ वेल दैट डिस्काउंट. ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप फिर एक बारी, अभी के लिए तो है ऑफर, बाद में जब नहीं हो, इफ यू आर वाचिंग अ वीडियो एंड यू वांट अ डिस्काउंट एंड इट इज नॉट देयर, तो फिर hello@edutap.co.in पे मेल डाल देना. ठीक है. Navneet has a question, ma'am, if I start now, will I be able to ace the exam? तो अभी I am on this questions, ये मैंने आंसर कर दिए हैं. तो the question that you are asking is कि अभी तक कुछ नहीं किया है. I am expecting that now if I start. तो see, the answer to this question is a yes and a no. A yes and a no, because it completely depends on your preparation, on the effort you are ready to put in. तो if you are ready to put in बहुत अच्छा एफर्ट इन द राइट वे, इन द राइट पाथ, विद राइट ओरिएंटेशन, तो ऑब्वियसली यू कैन मेक दिस एग्जामिनेशन. अभी कर सकते हो, कुछ बिगड़ा नहीं है. इट्स नॉट दैट फार अवे. वी नो पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करके. एंड नो, बिकॉज इफ यू ओनली विश टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन बट यू आर नॉट रेडी टू पुट इन द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड, है ना, वो फिर मुश्किल है. तो this examination is very well doable if you start now, but again I'm saying you'll have to be very smart in your preparation, you'll have to be very consistent, you'll have to be very dedicated, और वही करना रहेगा जो required है. अभी सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है. ठीक है, so that is one query. नवनीत, अगर आंसर होती जा रही है आपकी क्वेरीज तो आप लिखते जाना. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर प्रियांजलि का. मैम, कैन यू प्लीज गाइड मी द स्ट्रैटेजी हाउ टू कवर ईएसआई रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. तो ये फिर से ब्लू आ गया ना. आई हैव एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्लब्ड ऑल द क्वेरीज यहाँ पे ना, करंट अफेयर्स की. आई विल शो यू these are all the queries pertaining to the current affairs. So I'll answer all these in a go only, ठीक है, so that I don't have to come back to current affairs again and again. तो meanwhile I'll take up a question इधर से जो आया मेरे पास. Rishabh is asking, ma'am, I have taken EduTap's NABARD course and I am aiming for 2022. Please tell me how can I use the course for completing current affairs. Rishabh, my dear, there is a specific
introductory video in your course. Please go and watch that. How you can use the course to prepare given the timeline जितनी भी है. You have 6 months, 3 months, 40 days. उस हिसाब से we have made plan for you and given in that video. तो please उधर जाओ ऋषभ, watch that video, and then you can also connect with the current affairs faculty by dropping an email हमें hello@edutap पे, या फिर अपने कोर्स में you can even raise it on a forum, डिस्कशन फोरम है, दैट मैम आई वांट टू गेट दिस स्ट्रैटेजी कॉल विद द करंट अफेयर्स मेंटर. हो जाएगा, उधर से उधर बात कर लो, ठीक है. अदरवाइज मैं आप सबके लिए बताने वाली हूँ करंट अफेयर्स के लिए जो मेरे पास क्वेरीज हैं. ये सिर्फ कोर्स के लिए था, द स्टूडेंट हु हैड द कोर्स एक्चुअली, सिर्फ उनके लिए था ये, ठीक है. ठीक है. एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप अगेन एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस. इधर भी मेरे पास गूगल फॉर्म में भी आए थे. इट इज मैम व्हेन इज द नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड, व्हेन इज द एग्जामिनेशन. तो वेरी वेरी simple answer to that question is that we are expecting your notification in somewhere in this month. जुलाई में आ सकता है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग टेंटेटिव डेट आपकी एग्जाम की होनी चाहिए अगस्त में. अब देखो वो उससे आगे भी जा सकता है. आई एम नॉट सेइंग आएगा ही आएगा अभी, बट यू कैन नॉट बी लीनियंट बिकॉज योर काम इज नॉट टू रन बिहाइंड नोटिफिकेशन. योर टास्क इज टू प्रिपेयर. तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है. आप वो करते रहो. 30 days, 40 days, 45 days, 60 days, it is not gonna make any difference until and unless your preparation is hard enough. अगर नहीं है तो फिर 3 महीने भी कम पड़ेंगे, और अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो लेट हो रहा है या पहले हो रहा है. तो दैट इज माई सिंसियर सजेशन टू यू गाइज, ठीक है. तो अगस्त में एक्सपेक्ट करके चलो. आगे भी जा सकता है, हो सकता है, और नहीं भी जा सकता. आई एम टेलिंग दिस अगेन, ठीक है. चलो अभी एक क्वेश्चन और मैं लेने लगी हूँ. इट इज फ्रॉम अंकित अगेन दैट मैम इफ आई वांट टू अप्लाई फ्रॉम स्पेशलिस्ट फील्ड विल द गाइडेंस बी प्रोवाइडेड बाय एड्यूटैप. सी गाइज इफ यू वांट टू नो, आई वांट टू टेल यू स्पेशलिस्ट पोस्ट के बारे में. द फेज 1 इज कम्प्लीटली सेम फॉर स्पेशलिस्ट एज वेल एज द जनरलिस्ट पोस्ट, ठीक है. मैं बता देती हूँ सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन. जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है एंड देन देर इज दिस जनरलिस्ट पोस्ट, है ना. तो इनमें क्या रहता है. And I also have queries that can I apply for both these posts? No, you cannot. You can apply only in one of the posts, either general या specialist. Specialist के लिए you need to have a special degree in that particular field for which you are applying. Let's say you are applying for fisheries. तो fisheries के लिए you should have a degree in fisheries. If you are applying for generalist, then you should have a degree. Generalist के लिए तो कोई भी degree चलेगी. कोई degree नहीं चाहिए generalist के लिए. तो मतलब BA, BCom, BTech, एनी वन विद डिग्री 60% मार्क्स हो, जनरलिस्ट हो तो एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. अब इन दोनों में से एक ही कर सकते हो, फर्स्ट थिंग. एंड देयर फेज 1 इज एब्सोल्युटली सेम, ठीक है, ये सेम है. फेज 2 में क्या होता है ना, देयर इज अ डिफरेंस दैट पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड योर पेपर 2 जो रहता है दैट इज ESI प्लस ARD. दिस इज फॉर जनरलिस्ट, ठीक है. एंड इफ यू आर अ स्पेशलिस्ट देन यू डोंट हैव टू गिव ESI ARD, ये तो देना होगा, बट देन यू हैव टू गिव योर स्पेशल फील्ड पेपर. जैसे फिशरीज का है आपकी फील्ड, तो फिर फिशरीज पेपर आपको देना होगा. सो नाउ जो कोर्स की बात कर रहे हैं, तो एड्यूटैप प्रोवाइड्स द कोर्स फॉर जनरलिस्ट. दैट मीन्स वी केटर टू फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू आपके जनरलिस्ट के लिए. लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो यू कैन गेट दैट कोर्स, यू कैन यूज दैट कोर्स, यू मे यूज इट फॉर फेज 1, फेज 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, और फिर इंटरव्यू में. तो ये जो एक स्पेशल पेपर है ना विच इज इंस्टेड ऑफ ESI एंड ARD, वो आपको खुद प्रिपेयर करना रहेगा. दैट द गाइडेंस फॉर दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, द पेपर वी डू नॉट प्रोवाइड, ठीक है. ठीक है जी, ओके. चलिए तो अभी आई टेक अप द क्वेरीज. इधर जो भी आ रही हो फिर भी डालते जाइए, और अगर क्वेरी आंसर होती जा रही है तो आप लिख सकते हो दैट इट हैज बीन आंसर्ड, सो दैट आई गेट कि चलो ठीक है आपका क्वेरी आंसर हो गया है, राइट. एंड डू नॉट वरी, इवन इफ योर क्वेरी इज नॉट आंसर टुडे, डू नॉट वरी. हमने इस वीडियो के जो वीडियो मिलेगा आपको, इसमें डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म. यू कैन गो देयर टू द गूगल फॉर्म, post a query and it will be answered in the next AMA session, ठीक है. Yes, every Thursday I'll be coming live at 6 PM to answer your queries AMA की, ठीक है जी. तो गाइज अभी ये देखते हैं फिर द क्वेरीज दैट वर पोस्टेड बाय प्रणव, धनश्री, मनी, कवि. ऑल दीज वर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स जी.
a detailed information on current affairs पूछना चाह रहे थे, current affairs for phase 1, for phase 2, ARD, ESI. So I'm answering that. ठीक है, देखो current affairs, first of all I'll go to this slide again. It's very important you understand why current affairs are required. ESI, ARD दोनों में चाहिए current affairs, even GA is of current affairs. तो phase 1 में GA, ESI, ARD 20 मार्क्स है GA, 40 is ESI, 40 is ARD. आउट ऑफ द 40 ARD में करंट अफेयर्स की वेटेज है 20, ESI में आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 30 to 35, GA में तो आई कैन से 15 to 17. So all these constitute your current affairs marks for phase 1 only. अभी करना क्या है इसके लिए? See, you have to refer to a current affairs magazine. My suggestion, sincere suggestion at this point of time. At this point of time का क्या मतलब है? When you know that paper is not very far away, right? So you should refer to a PDF, current affairs magazine, which is reliable, which contains all the important news which are required for the examination. How do you know that this news is important for me or not? You must see the previous year paper, or refer to a PDF or the current affairs magazine that is provided by an institute or provided by someone who already is providing it for the NABARD exam only. क्योंकि अभी बहुत सारे magazines are available but they are not for NABARD examination, so that you have to keep in mind. तो PDF of current affairs magazine you should refer to for 3 to 4 months. GA only I am talking about. ठीक है, J में क्या आता है? स्पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस न्यूज, साइंस एंड टेक हो गया, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुअरीज, all these things, these are GA. तो that you have to do for 3 to 4 months. Again here 3 to 4 months आप कहोगे कि मैम हाँ ये मुझसे हो जाएगा, तो please remember you just don't have to cover it, you have to retain it really thoroughly, बहुत अच्छे से. ठीक है, फिर when I talk about ESI, only current affairs I'm talking about here, static की बात नहीं हो रही हुई. तो ESI 30 to 35 मार्क्स का जो यहाँ पे है उसमें you have to again refer to a current affairs magazine which covers the news which are related to economics and social issues. Economy से related है, social issues में क्या है? Health, education, आपका social issues में और क्या आएगा? Tribal affairs आ जाएगा, gender issues would be there. So all these things together form social issues. Current ही है ज़्यादा. तो CA magazine you have to refer for 6 months minimum. If you have been doing पहले से तो 6 to 9 months. 9 months is the ideal time. This is for like CA. तो PDF of current affairs magazine you must do for ESI, right? ESI के लिए आप magazine करोगे. Plus there are reports that you have to do. I am writing here so that you do not get confused. Reports and schemes, government schemes. Reports क्या होती हैं? The ones that are released by Indian agencies. नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाली है, any ministry has come up with any report, union budget, economic survey, 15th finance commission report. So these are the reports that are released by Indian agencies जो आपके again social issues से relate करती है, and also released by international bodies like ADB, World Bank, WTO, all those. So these are the 3 broad things that you have to cover. My suggestion is cover these for 6 months minimum, and for schemes you have to cover 9 months. Why am I saying it? ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नाबार्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? प्लीज रिमेंबर करंट अफेयर्स ऐसे करना है. अभी आप बोलोगे कि सोर्स क्या है, तो सी सिंपल थिंग इज व्हेन यू नो यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स at this point of time, go to current affairs magazine, find a magazine which caters to the questions, the news which are related to ESI. ठीक है, the magazine should ideally cover reports also, or government schemes के लिए भी you should find a compilation, because if you feel at this point of time you will go to ministry websites and make your own notes, it will be difficult. तो EduTap की जैसे अगर बात करूँ मैं, तो we provide 3 separate PDFs. Magazine अलग मिलेगा, reports monthly comes separately, SchemesTap is a document for schemes that comes separately. तो वो ESI के लिए वो 3 ही पढ़ने होते हैं आपने. तो ऐसे you find any other source, अगर कोर्स नहीं है तो यही करना है. ARD की बात करें तो ARD में again ARD has agri news, agri magazine जिसको हम बोलते हैं, and second would be schemes जिसको मैं बोलूँगी majorly जो आएंगी. तो वो आपको करना रहेगा. PIB is the best source. PIB plus there is this website डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की ARD के लिए बहुत काम आएगी, तो आप नोट कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो दिस इज द वन दैट यू शुड रेफर टू फॉर ARD.
अगेन 6 months इज द कहानी. व्हेन आई टॉक अबाउट स्कीम्स 9 months है, नहीं तो 6 months की कहानी है. सारी करंट अफेयर्स की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पहले से करते आ रहे हो तो 9 months तो करना ही है. दिस इज हाउ यू नीड टू गो. इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो बाय मेंशनिंग यस दिस इज क्लियर. दिस इज क्लियर. ये लिखो अगर क्लियर है, जो समझ में आया, जो मैं कहना चाहती थी. देन आई विल टेक फर्दर क्वेश्चंस. ठीक है, देखते हैं अभी और क्या डाउट्स आ रहे हैं मीनवाइल आपके. लास्ट ईयर फेज 1 हो गया, फेज 2 नहीं हुआ. दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस यू नीड अलॉट. उसके बारे में बात करेंगे आगे. योगेश कह रहे हैं ये. Sakshi is asking all latest kind of advanced estimates are important, right? Yes, they are important. Latest estimates. तो यही मैं जो बात करी थी Department of Economics and Statistics. I'll show you this, okay? I'll show you this website. It will be very helpful to you. Department of Economics and Statistics. You may find it. इस पे सारे ARD के, अगर मेरी ये वेबसाइट अभी चल गई तो मैं दिखा पाऊंगी आपको. नॉट डिपार्टमेंट, आई एम सॉरी, मैं डायरेक्टोरेट कहना चाहती थी. सो हियर दिस इज द वेबसाइट, डायरेक्टोरेट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो द एग्री स्टैटिस्टिक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो देखो यहाँ मिल रहे हैं आपको. ऑल दीज एग्री स्टैटिस्टिक्स से आ चुका है. थर्ड एस्टिमेट्स आ चुका है फूड ग्रेन्स का. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर ARD करंट अफेयर्स. तो आइडियली इफ यू रेफर टू अ मैगजीन करंट अफेयर्स की, तो वहां पे ये कवर्ड मिलेंगे आपको. जैसे कोर्स है अगर EduTap का, अगर आप फिर ये क्वेश्चन पूछने आए हो तो प्लीज ये गलती मत करना, मैगजीन में कवर्ड मिलेगा आपको. अगर नहीं है तो यू गो हियर एंड कवर इट योरसेल्फ. बहुत जरूरी है that you cover advanced estimates. Usually there are 4 estimates that come out. The one that is recently available before the examination, that you have to cover. अब वो 1 महीना पहले आए, 2 महीना पहले आए, 3 महीना पहले एग्जाम के, you have to cover it. ठीक है. हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स के भी there are 3 estimates that are released by the government, तो you must cover the latest one. All 3 करने की जरूरत नहीं है. Questions are asked from the latest ones only. ठीक है जी. Is this clear? ठीक है, ठीक है जी. ग्रेट, थैंक यू. आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा बूस्ट करते रहो, मुझे भी थम्स अप देके, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ समझ में आ रहा है. बस क्वेश्चंस मत पोस्ट करते रहो, सो दैट आई गेट कंफ्यूज के बस क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, आंसर समझ भी आया है. ठीक है, और ले लेते हैं क्वेश्चंस. How to tackle questions which are related to identify the schemes in both phases. हाँ, there is a question. I'll take you back again to my PowerPoint ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ. Now questions are there in schemes. Phase 1, phase 2 दोनों के लिए schemes के questions होते हैं. Now here when you say that how do I identify a scheme, it means that you really need to have a good understanding of the scheme. इसमें ना, let me tell you, coverage of current affairs is not gonna be enough. Let me tell you, नहीं. It is about revision. If you have just read the scheme, है ना, MG नरेगा, who has released it, what is it about, कितना वेज है, इतना करके जाओगे, नई बात बनेगी. एक तो important dimensions you have to cover, PYQs के थ्रू आपको पता चलती हैं. Secondly, multiple revisions you have to do again and again, because this exam is all about what? You have to go there and recall. Answer आपके सामने है, लेकिन trust me, if you just read, if you cover and go, 5 options are there. 4 नहीं है, तो 5 ऑप्शंस में से what will happen is you will be in a situation, I am able to eliminate one, I am able to guess that चलो B तो आंसर नहीं है, but I am confused C D E में से क्या आंसर होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा. And worst, when you are stuck between 2 options कि याद नहीं आ रहा मुझे, so that is the worst scenario. So what I tell you is, these are the things that you have to keep in mind. Government schemes, reports and current events. When I say you have to cover for 6 to 9 months, please keep the timeline in mind, and just coverage is not gonna be enough. You have to do revision multiple times. Make a target of revision of 5 to 6 times. अब ये revision करोगे कैसे? Take quizzes. This is the best way to test yourself, test your knowledge कितना आया है, and then after quiz also, do not be heartbroken कि मेरे marks अच्छे नहीं आए, and also do not be please very happy that I've got really good marks, because that was only one set जिसमें अच्छे marks आए. पेपर में सारा एक साथ आने वाला है current affairs. So do revision a lot. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिविजन करने की ज़रूरत है. Now I have another question.
यहाँ पे मैंने अभी देखा था, आई टेक द नेम ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लवली कमेंट्स करते रहो, मुझे अच्छा लगता रहेगा आपके कमेंट्स आएंगे तो। सो आई हैड अ क्वेश्चन मैम, हाउ टू आइडेंटिफाई गवर्नमेंट स्कीम कौन सी करनी है। देखो, नाउ देयर आर टू मेथड्स, वन इज खुद से कर रहे हो, एक है यू हैव अ रिलायबल कोर्स। तो अगर रिलायबल कोर्स है आपके पास में, कंटेंट यू ऑलरेडी हैव, यू जस्ट नीड टू कवर इट। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ स्कीम स्टैप व्हिच इज द डॉक्यूमेंट गिवन बाय EduTap इन अ मंथली बेसिस अपने कोर्स में। उसके अलावा अगर आप खुद से कर रहे हो तो व्हाट यू शुड डू इज schemes that are in news and are recently released, इनमें फर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी इफ यू आर नॉट एबल टू रीड माई हैंड राइटिंग, ये पेन की गलती है, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है ऑल दो हैंड राइटिंग, पर पेन भी ठीक नहीं चल रहा अभी। तो इन न्यूज की अगर मैं बात करूं, ओल्ड स्कीम्स which MGNREGA, let me take an example, it was released in somewhere 2007-8, but it is in news every month if you say, sometimes the wage revision has been done, कुछ ना कुछ कि कितना टारगेट हैज बीन अचीव्ड, द मिनिस्ट्री इज प्लानिंग कि अभी इतना वेज इतना कंप्लीट हो गया है टारगेट। सो द ओल्ड स्कीम्स दैट आर इन न्यूज, दे आर रेलेवेंट फॉर यू, एंड दोज आर द सेकेंड वंस विच आर रिसेंटली रिलीज्ड, अभी अभी ही लॉन्च हुई हैं। तो यूजुअली लॉन्च कब होती हैं, इन द यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्कीम्स यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यू हैव टू कवर दीज ऑफ द लेटेस्ट वन। ये रिलीज होती है फेब्रुअरी में दोनों। तो जो स्कीम्स इसमें आई और ऑन अ मंथली बेसिस अगर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस कर दिया कि ये इनिशिएटिव स्कीम का हम ले रहे हैं, तो दैट यू हैव टू कवर। सो इन पास्ट 9 months बिफोर योर एग्जामिनेशन, द स्कीम्स दैट वर इन न्यूज एंड दैट वर रिसेंटली रिलीज आपको कवर करनी रहेंगी। विद दैट आई वांटेड टू टेल यू, ये भी कर लेना यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द स्कीम्स। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो related to schemes only, then I'll take further questions. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात आगे करते हैं। मधुसूदन इज आस्किंग, कुरुक्षेत्र समरी स्वांति इज आस्किंग, कोर्स में नहीं है स्वांति। The Kurukshetra magazine is covered in your course in the form of quiz, like question and answer format में, क्योंकि objective questions वहां से करने हैं, और the data, the fodder points that you need to write an answer, वो भी वहां से मिल जाएगा आपको, you can download the PDF। ठीक है। Aradhya is asking, ma'am please provide test series section separately. अच्छा, test series are not available as of now separately, we are providing the full package। तो आराध्या आपका point note कर लिया है, I cannot assure anything in that कि आएगा या नहीं अभी test series, लेकिन ना if you want to practice तो बहुत सारे कोर्स है तो उसमें तो बहुत सारे क्विजेज हैं, नहीं तो फिर यू हैव टू फाइंड आउट फ्री क्विजेज, काफी लोग प्रोवाइड करते हैं, वो देख सकते हो। ठीक है। ओशो इज आस्किंग, ओशो आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आया, लास्ट ईयर का पैटर्न इजी लग रहा था, यू मीन टू से पेपर थोड़ा इजी लग रहा था लास्ट ईयर का, तो आप करो फिर एफर्ट, क्योंकि देखो easy लगना is one thing, but when you are sitting in the examination, you are attempting an exam in a pressure, in a time pressure where there you have to complete 200 questions in a span of 2 hours, 120 minutes में 200 क्वेश्चंस करने हैं। द रूम इज फुल ऑफ द पीपल जिनके टक टक कीबोर्ड्स की आवाज आ रही है या माउस के आवाज आ रही है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इवन द क्वेश्चंस जो याद आते थे आपको या कर पाना था आपने। तो बाद में शायद थोड़ा इजी लगता है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इनफ प्रैक्टिस करो। दैट टेल्स मी, दैट पॉइंट टेक्स मी टू द पॉइंट कि आपको मैं बताऊं, प्लीज टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, मुझे अभी अपनी शीट के क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं, तो अभी मैं वहां चलती हूँ, उसमें भी मैंने देखा था क्वेश्चंस आए हुए थे अबाउट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आई विल आंसर दैट। ठीक है, फेज 2 ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बारे में पूछा जा रहा है, दैट व्हाट अबाउट फेज 2 ऑब्जेक्टिव पैटर्न। सी, फेज 2 ऑब्जेक्टिव ESI प्लस ARD है आपका, है ना, ESI प्लस ARD टुगेदर आता है आपका 50 मार्क्स का पेपर इन फेज 2। Let me tell you here, whatever you prepare for phase 1 is gonna be utilized here now. That's why we say there is an integrated preparation of this examination, क्योंकि सारा objective तो same है। ये ESI, ARD, current affairs, whatever you have prepared, the schemes, the reports, the current events, even the static part is gonna be utilized there again. Only difference would be थोड़ा सा एक level ऊपर question आ जाएगा in your phase 2। ठीक है, now I'll take you
to my other list of questions that I had. ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहुंचे थे. I have tried to answer current affairs pertaining all questions. अभी चलते हैं अभिषेक के क्वेश्चन पे. जो नेक्स्ट है गाइज, आई एम अगेन टेलिंग यू बिकॉज सी अ लॉट ऑफ क्वेरीज अभी आप लोग पूछ रहे हो मुझसे. आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. आई विल बी हियर, बट इफ एनी क्वेरी रह जाती है तो अपने गूगल फॉर्म में आप डाल देना. इसका लिंक नीचे मिलेगा. आई विल डेफिनेटली मीट यू नेक्स्ट वीक ऑल्सो. ठीक है, तो नेक्स्ट है, स्टिल आई हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, व्हाट शुड आई डू? अभिषेक जी, इफ यू आर वॉचिंग द सेशन, if you are serious about the exam, if you really want to appear and clear the examination, start preparation without giving any first thoughts. वो क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले तो अपना क्लैरिटी लानी है that I cannot waste my time in sitting and thinking करूँ या नहीं. अगर करना है, clarity ला चुके हो, then start doing the preparation. There are simple 3 steps that you need to follow to prepare for this examination. I'll tell you आगे जाके, अभी थोड़ा सा आगे बताती हूँ. उसमें सबसे पहले पिकअप योर ARD स्टैटिक एंड योर करंट अफेयर्स, रिपोर्ट, स्कीम्स, करंट अफेयर्स, इन 2 चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो अपना. आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश कुमार, मैम क्या हम इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? एंड नाबार्ड ग्रेड ए मेंस का पेपर कहाँ मिलेंगे फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट? 2 क्वेश्चन है अभी गणेश के. तो गणेश, दिस इज फॉर यू ऑल्सो गाइज, सुन लो, आपके काम आएगा. अगर खुद क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो you can give interview in Hindi. Of course, you can choose a language, English or Hindi. Regional language you cannot choose, either Hindi or English. And there will be no bias. जो आपको doubt है ना, that probably I am from Hindi medium, मेरी तरफ doubt bias आएगा कि दूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. Whatever language you are comfortable in, Hindi or English, you can choose that and you can appear in interview with that only. ठीक है, अभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कहाँ मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स? तो मैंने जनरलिस्ट स्ट्रीम कैंडिडेट्स को तो बता दिया है दैट यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, और यू कैन फाइंड अ वीडियो ऑन आवर चैनल जिस पे लिखा हुआ है हाउ टू डाउनलोड PYQs. तो वहाँ जाके आप जनरलिस्ट स्ट्रीम के लिए डाउनलोड कर सकते हो. फॉर द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द कोर्स, तो उसके लिए बताना मुझे मुश्किल रहेगा कि आपको कहाँ मिलेंगे. ठीक है, वो थोड़ा सा आपको रिसर्च अपने एंड से करनी रहेगी. ठीक है जी, आगे चलें. ठीक है, कुमार ऋषभ का क्वेश्चन है, मैम ग्रेजुएशन में परसेंटेज हटा सकती है? एज यू मीन द एलिजिबिलिटी दे हैव कि 60% ही होना चाहिए? वो आपका क्वेश्चन नहीं है ऋषभ, मुझे ऐसा लगता है दैट यू वांट, वो आपकी विश है कि ऐसा हो जाए, दैट नाबार्ड रिमूव्स द परसेंटेज क्राइटेरिया. तो गाइज वो मुझे मुश्किल लगता है ऐसा होना, है ना, कि वो हटा ही दें. बाकी आई डोंट नो, आप अट्रैक्ट कर लो इतने अच्छे से, इतने अच्छे से आप उसे चाहो कि आपको मिल ही जाए वो, तो आई डोंट नो, एज ऑफ नाउ उसके चांसेस कम लगते हैं. ठीक है, तो निखिल के क्वेश्चन पे चलते हैं. निखिल शरण इज आस्किंग, those of you who have joined just now guys, I have a list of questions with me. I'm answering, ये सब आपने ही पोस्ट किए हैं. I am answering these and I'm also trying to take the questions जो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, तो guys next है, what could be my backup plan after NABARD as QRE is only qualifying and other exams में QRE is important and my QRE are below average. तो निखिल, NABARD grade A में QRE is just qualifying. You need to get a decent score to clear the cutoff. इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको. लेकिन और कौन सा एग्जाम ऐसा है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी. You will have to probably find out the exams जहाँ पे quant reasoning नहीं है, और आपको बाकी क्या स्ट्रॉन्ग है फिर वो भी फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय निखिल इज, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल सो नोट्स मेकिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी, कैन आई हाईलाइट समरी शीट्स एंड रिवाइज देम? ऑफ कोर्स निखिल, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ EduTap, that is why you have the summary sheets, so that is the ideal thing. You do not need to make notes if you have the summary sheet which you have. तो देखो, वीडियो देखो, साथ साथ में summary sheets पे जा सकते हो. Directly also you can go to concept notes and then summary sheets पे. You must download the summary sheets and mark it there only, whatever is important. ठीक है, पहला. Another question that Nikhil has is how to send the descriptive answers to evaluate to EduTap and will all my answers be evaluated? See, for descriptive answers, we have provided periodical test. After every 3-4 chapters, there is a test, and also we have full length test. So you just have to go to the interface,
type the answer and it will be evaluated by a faculty here and will be sent back to you. That means uploaded on the portal and it will be notified to you कि आपकी copy has been checked. Usually 4-5 days में तो copy gets checked. तो वो आपको वहाँ से करना है. ठीक है, आप अपने आंसर्स वहीं पे जो अवेलेबल है टेस्ट उसमें जाके इंटरफेस पे लिख सकते हो. ठीक है जी. Then what should be the order of learning for ESI? For current affairs, once ESI static and ARD important topics are done. So I have told you the order of importance मैंने आपको बता दिया है. Report schemes, current affairs magazine you have to do, जिसमें से सबसे ज़्यादा important है government schemes, followed by ESI current affairs and reports. Guys please note this down, ये बहुत important है आपके लिए. Government schemes किए बिना अगर नाबार्ड पेपर देने जा रहे हो तो अपनी गाड़ी से टायर निकाल के जा रहे हो ड्राइविंग पे आप. Let me tell you this. If you are not पुटिंग टायर इन योर गाड़ी तो कैसे चलेगी, वही होने वाला है हाल आपका बिना स्कीम्स के. गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी? आई टोल्ड यू 9 months बिफोर द एग्जामिनेशन. कैसे फाइंड आउट करना होगा? विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, जो भी स्कीम सिलेबस से रिलेट कर जाए. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर. चलें. नोटिफिकेशन कब आएगी? ये बार बार आ रहा है, जल्दी नहीं आ जाएगी ये पूछने से. प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए प्लीज. आई हैव टोल्ड यू नोटिफिकेशन वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन जुलाई, तो आपका एग्जाम हो सकता है कहीं अगस्त में जाके, राइट? बिकॉज ऑन एन एवरेज यू हैव लाइक 45 से 60 डेज रहते हैं, 60 नहीं 45 डेज इन द नोटिफिकेशन एंड फेज 1. ठीक है, ओके. आई हैव डन. तो ये वाली क्वेरीज मैंने आंसर कर दी. इफ यू अलाउ मी गाइज तो आई मार्क दैम एज येलो. I'll move now. Supriya Datta. If I cover complete course of EduTap, I'll be able to crack exam. Is it sufficient? See, let me tell you, the course that has been provided to you is more than sufficient. It has everything that is required. Challenge क्या आपके लिए? सिर्फ उसको कवर करना है और बहुत अच्छे से कवर करना है. Forget about other sources. जरूरत ही नहीं है, सवाल ही नहीं है. You just have to focus on what is given in your course and then revise it, cover it thoroughly. That is what I can tell you. You do not need to refer anywhere else. ठीक है, of course you will be able to crack if you cover everything that is given really well. ठीक है, those of you who are actually enrolled in the course already है, उनको अलग से भी strategy चाहिए तो भी आप मेल डाल सकते हो ना strategy के लिए. Jaspreet is asking, this is important. Ma'am, my one doubt is NABARD Grade A officer को CAB exam का benefit मिलेगा क्या? JAB and CAB exams usually you give when you are in the banking industry. But let me tell you, in NABARD there is no such benefit that you will get when you are appearing in the Grade A. अगर आपके पास CAB already qualified है, ऐसा कोई as such benefit नहीं है जो आपको मिलेगा. ठीक है, right? Shreya Banerjee is asking, my meanwhile questions I'm taking from here also. Please give us a study plan. See Shreya, this is for everyone. I have already posted a video on our channel which is about a 3-month study plan. So what you can do is you can refer to that study plan and उसको थोड़ा सा change कर सकते हो. You can customize that. I have told what is important, थोड़ा सा इसमें क्या less important है. You can customize those days, that plan according to the days that now you have in your hand. I am telling you now you have around 40-45 days आराम से आपके हाथ में, आराम से, right? So customize that study plan and follow that. Please वो video देख लेना, ठीक है? And if you will like post in comment section में नीचे कर दोगे that you want me to come up with the latest study plan keeping 2 months in hand या less than 60 days या 50 days study plan, तो I will come up with that also. लेकिन उसके लिए you'll have to post in the comments नीचे जाके, है ना? जितने ज़्यादा comments आएंगे उतने ज़्यादा फिर मतलब बच्चों को ज़रूरत है उसकी. ठीक है, NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट के ऊपर I will not be able to comment. Vimla Devi, as of now I will not be able to comment will it come or not, because it is not a regular exam. It does not come every year like NABARD Grade A. NABARD Grade A comes every year. So development assistant as of now I will not be able to tell you clearly, right? So I'm taking you to next question. Abhishek, again Abhishek is asking, I could not clear UPSC. Now I'm pondering to try in banking sector. Is it possible in a short duration of time to clear NABARD? See, time is not an issue in NABARD if you know what to cover, how to cover, and then you are dedicated enough. Also, let me tell you, NABARD is not like other banking examinations. Quant, reasoning, English is not required here. Required, but you just need to get a decent score. You don't need to have an expertise in quant, reasoning, English. पहला ये. दूसरा, the job profile is also quite different from the banking.
तो नाबार्ड जो है इज द रेगुलेटर एक्चुअली, है ना, द रूरल बैंकिंग इंडस्ट्री का. तो इनका जॉब अलग है थोड़ा. व्हेन यू बिकम अ ग्रेड ए ऑफिसर, यू आर एन इंटरफेस बिटवीन द नाबार्ड बॉडी इटसेल्फ एंड द अदर बैंक्स एक्चुअली, रीफाइनेंसिंग फाइनेंसिंग करते हो जिनकी, तो वो अलग है. अभी प्रिपरेशन की बात पे वापस आ जाऊं मैं. एज यू आज, इज इट पॉसिबल? Again, the answer is yes. If you are willing to prepare really well, you have the content, you know how to use it, तो of course है, बिल्कुल सही दिशा में चलते हो. तो नहीं चलते हो, if you plan to prepare, you do not prepare, then you do not prepare in the right direction, you do not prepare what is required, तो फिर it is not. ठीक है. There are examples जहाँ पे लोगों ने they have cleared the examination notification आने के बाद भी. कम है ऐसे लोग, लेकिन हैं. एंड देर आर पीपल हु हैव बीन अपियरिंग लाइक काफ़ी पहले से, दे हैव ऑलमोस्ट डिवोटेड 1 year या उससे ज़्यादा भी, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर. तो ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाएगा मेरे लिए टू आंसर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. एंड स्नेहा इज आस्किंग 50 days स्टडी प्लान के लिए. तो गाइज कॉमेंट करना बाद में वीडियो के. ठीक है. Aditya, I'll take your question that can you put late in your father's name? Aditya, when the form opens, no, at that time you can put. उसमें ऐसा नहीं है that at this point of time you cannot put. आप कर सकते हो. ठीक है. Purnima is saying, ma'am, need YouTube classes and series like last year. ठीक है. Thank you so much, Purnima. We're really glad that you guys really like the series. तो आप लोग ठीक है, आपसे हम suggestions लेंगे that what type of series you want us to come up with separately. ठीक है. आप comment भी कर सकते हो बाद में. अभी आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम, ये मैंने बता दिया है भूमिका. द नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम, व्हेन विल इट कम? वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस मंथ. आगे जा सकता है, अगेन आई कैन नॉट से आएगा ही आएगा अभी इसी मंथ इतने टाइम पे. दैट इज नॉट माई यू नो माई कैपेसिटी टू से. आई एम नॉट द HR डिपार्टमेंट, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद दैम. और हैं भी तो बता नहीं सकते ना ऑब्वियसली वो लोग आपको, अगर जो हैं वहाँ पे. तो इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए अपनी प्लीज़. सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान दीजिए. पेपर कभी भी आ जाए उसकी फिक्र मत कीजिए. अबाउट द जॉब रोल, आई हैव टोल्ड यू, here you are an interface. When you join as a grade A officer, your post will be of assistant manager. Grade A means assistant manager. यहाँ पे banking काम नहीं हो रहा है. There is no public dealing, rather you are working in teams. After a period of training, you are then allocated to your regional offices जहाँ पे आपको अपना काम करना है. You have to be a team player. You are usually an interface between the banks जो आते हैं आपके पास loans लेने के लिए for their rural projects, agriculture projects से और initiatives नाबार्ड के चल रहे हैं, वो आपको देखने रहते हैं with your team of course. ठीक है. Next is K Chakravarti has asked how to choose post regarding generalist or specialist, because the number of vacancies are so less in specialist post as compared to general. Now this is again a question that comes to the mind of students who have both, like जिनके पास special degree भी है तो उनके पास they have options, they can appear in general or specialist. But my dear friends, again I'll write this and tell you so that there is no confusion. There are posts general where any degree you have, you can appear here. Okay, because this is a general post. Second would be a specialist post, like water resources, fisheries, agri-engineering, agriculture, ऐसे. There you have to have a special degree. ठीक है. इसमें से अभी generalist posts are usually more in number, while the specialist posts are less in number. For every stream it varies. Sometimes it is 2, 3, 12, 15, 18, 25 ऐसे हर फील्ड के लिए अलग हो सकती है. बट जनरलिस्ट पोस्ट आर यूजुअली, जैसे अभी तक अगर मैं एवरेज लूँ 70 आप ले सकते हो, है ना, ये पोस्ट रहती है. सो यू हैव टू चूज, इफ यू हैव अ स्पेशलिस्ट डिग्री तो यू हैव टू चूज आप इसमें से किस में अप्लाई करना चाहते हो. इफ यू आर नॉट गुड इन योर ओन, अपनी खुद की डिग्री आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इन दैट, देन यू कैन गो फॉर जनरलिस्ट. बट देयर यू हैव टू स्टडी ESI एंड ARD सेपरेटली. इफ यू हैव अ डिग्री like any degree which is not a specialist for agriculture के लिए, तो फिर तो you have to appear in general only. ठीक है. इसमें my suggestion would be, if you have a specialist degree and you are good in that subject, if you feel you're confident about it, go for it. क्योंकि अगर seats,
they are less. Let me tell you, if seats are less, then of course guys, competition, the number of students who are appearing, that is also less, right? तो ये भी ध्यान में रखना होगा आपको. But of course if you are not good in your own degree, then तो you should go for general only, क्योंकि फिर तो आता ही नहीं है वो, वैसे उसके chances कम है ना, that you are not good in your degree. Okay. Abhi, I'll go to the next questions that I have with me. Abhay Varade has asked a question. I have been confused regarding NABARD Grade A and other banking examinations. What should I do at this point of time? Sometimes I think general banking is quite difficult than NABARD. There is also ESI part. So guys, इसमें ये जो अभय आपका question है, basically you are confused that shall I choose a banking examination where you have to prepare for quant, reasoning, English, etc. or shall you choose NABARD where quant, reasoning, English है, करना है, but it is not it is not merit, it's just qualifying, and rather you have to cover economic, social issues and agriculture, rural development. So let me tell you, it is for generalist post, ESI ARD, है ना. You first of all see yourself that what job do you want to have, then what is your aptitude, किसमें ज़्यादा अच्छे हो वो देखो, फिर आ जाओ एग्जाम पे that quant, reasoning, English कितना आएगा, उधर कितना आएगा, उसमें से आप कितने अच्छे हो चूज करो वो. If you feel I'm really good in quant, reasoning, English and I'm ready to be a part of the banking industry where I'm dealing with people directly, तो उधर जाओ, कोई सोचने की ज़्यादा बात ही नहीं है. But you want if you want a job where जहाँ पे you don't have to deal with people, जहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए प्रिपरेशन में, तो फिर ऑब्वियसली गो फॉर नाबार्ड, बिकॉज देयर यू हैव टू प्रिपेयर ESI ARD. वो बहुत डीप में आर नॉट रिक्वायर्ड, राइटली यू नीड, बिल्कुल सही दिशा में चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ESI की, कुछ ARD की, एंड देन करंट अफेयर्स वो करने हैं. स्टडी प्लान के लिए यू शुड वॉच वीडियो अवेलेबल ऑन आवर चैनल पहले ही, ठीक है जी. तो दिस इज अगेन आई हैव आंसर्ड दिस, ठीक है. आई होप ये आंसर हो गया है. अभी इफ यू आर वाचिंग इट तो लेट मी नो हो गया है, ठीक है. तो ये जो पिंक है ना, नाउ दीज आर रिलेटेड टू ESI. दीज क्वेरीज एक्चुअली आई हैव क्लब्ड दीज क्वेरीज, दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स वाला पार्ट. तो what topics are important for social issues? Chandan is asking, I am agriculture student, I am preparing for generalist post, but I am not strong in ESI static part. लास्ट टाइम इन डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑल क्वेश्चंस वर फ्रॉम ARD. अभी इस साल क्या होगा? फिर गणेश has asked how to tackle economics and social issues syllabus. Agri graduates have this doubt if they are preparing for the generalist post. Ma'am, how to go for the ESI and ARD? So I'll answer it here. ये मेरे पास और भी queries हैं. हाँ, I'll show you these queries. How to balance ESI and general studies. So general studies, I think you're talking about the current affairs part, because that is what general studies is. How to prepare for ARD, है ना, ये आपकी query है. So all these queries which are pertaining to ESI ARD, I'll try to answer here now. See, ESI, I'll first talk about ESI. ESI static has less weightage in phase 1, right? Like 5 to 10 marks. Phase 1 में. When we talk about phase 2, then its weightage is around 20-25, because there are descriptive questions along with the objective, ठीक है. So you have to understand that majorly ESI is about current affairs. If you are having a good hold over the current affairs, government schemes, reports या बाकी current affairs, तो you can answer ESI, इतना problem नहीं आएगा. अब बचा बाकी चीजें, where to do. So there are few chapters that are more relevant for ESI. कुछ chapters आपको पहले करने चाहिए. You do not need to have a very in-depth understanding ESI की, ठीक है. Social issues is majorly about, social issues क्या हैं, हो क्या रहा है, इश्यूज क्या है इन योर सोसाइटी, तो करंट ही है मेजरली. इकोनॉमिक्स बचता है आपका, एंड देयर आर चैप्टर्स लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स. इन्फ्लेशन है ना, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं आपकी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. सो दीज आर फ्यू चैप्टर्स विच विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. आप इन चैप्टर्स को देख लीजिएगा. ज्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है. डोंट वरी मच अबाउट ESI स्टैटिक पार्ट. इफ़ यू हैव अ रिलायबल कोर्स तो उधर में से ही पढ़ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, और बाकी आप करंट अफेयर्स पे फोकस करो. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ARD, तो ARD में तो स्टैटिक करंट डिवीजन इज गोना बी रियली रियली गुड. करंट अफेयर्स आई हैव टोल्ड यू कैसे करना है. स्टैटिक के लिए यहाँ पे अराउंड 8 और 9 चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आई एम नॉट सेइंग अदर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर frequently asked in the examination. So what are those 8 to 9 chapters? Ideally you should have known अब तक.
अगर if you want me to tell you तो let me know in the comments that do you want me to tell you the 8 to 9 chapters. तो आपको पहले वो करने होते हैं and then you go to the other chapters. Let me know by typing in the comments if you want me to tell you those chapters. I was expecting you all to tell me those chapters actually. बताओ, shall I, or you know already, or you will find out yourself? थोड़ा सा ढूंढते चैनल पे तो मिल जाता. तो there are few chapters, that is your homework, उसको please find करना. आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. I've told multiple times, मैं नहीं बताती अभी आपको, because then everything you will get इधर से ही अभी, है ना. थोड़ा सा एफर्ट डालिए, ठीक है. अच्छा, you want me to tell? Okay. बताना पड़ेगा, ठीक है. बता देते हैं. If you really want तो बता देते हैं. These are the most important chapters that you should actually cover. तो it is about basics of agriculture, right? This you should cover. I'm writing, you can take a snapshot or you can even write. Then there is this animal husbandry, plantation horticulture. This I know I have gone through your syllabus. तो आपको भी अगर syllabus देखा है, you can mark there. Seeds, soil conservation, right? Irrigation, fisheries. So these are the most important chapters of ARD. आपको you should do these chapters first, then you should go to current affairs, simultaneously your schemes, reports जो रहती हैं, and then you can come back to other chapters of ARD. ठीक है, जैसे forestry है और बहुत सारे chapters हैं, you can go through them. Okay, so these are the most important chapters. If you find them useful, तो मुझे एक बारी बता दो that yes, you have noted them. आपने नोट कर लिया है, so that I can move forward. तो ये chapters हैं that you should definitely focus on. Take a screenshot if you want, or you can write down somewhere. ठीक है. Also in ARD, let me tell you, there are few reports that are relevant. ये भी मैं बता ही देती हूँ आपको, आपके काम आएगा ये. ARD reports which are agri census, ठीक है, लाइवस्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, लेटेस्ट वन अभी आ चुकी है 2021. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसस एंड SECC ऑल्सो यू शुड डू 2011. So these are some very important reports you should cover. These are kind of static because they are not released every month. Okay. Chalo, thank you. Now I'll go to next queries. You can post your queries either here more. So these queries I have answered. I have tried to tell you how to go about ESI, how to go about ARD. ठीक है. Shubham has a question. Can one apply for both general and IT stream in NABARD? No, you can apply for only one stream, either general or specialist. ठीक है, both you cannot apply. Why? Because phase 1 is common. Then Daniel has a question. I am a beginner. I am ready to join course, but I want to know within the exam, if it is in September, can I complete the syllabus or not? See, I just want to tell you, if you start at this point of time, obviously you will be compromising few things. But then you should know that if I am compromising few things, then other things which I am doing, I have to do them really well. वो बहुत अच्छे से करनी है, and I have to make my chances bright of clearing with that only. So that is what one thing that I want to tell you, Daniel, and every other student who has this doubt in mind, that will I be able to complete the syllabus or not. Syllabus is not that much कि cover नहीं होगा, पर सारा करना भी नहीं है. What is required is your dedication. I'm saying again. I'll tell you the most important chapters. I've told you. Syllabus study plan मिल जाएगा, but are you ready to put in your effort on a daily basis without having even an ounce of self doubt कि नहीं मुझसे होगा या नहीं, ये सोचना ही नहीं है, मुझे तो करना है.
तो प्लीज आप समझिए दैट द एफर्ट दैट यू पुट इन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो एफर्ट होना सही दिशा में चाहिए, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Gaurav is asking, the notification for NABARD is about to release anytime soon. I fear I will not be able to cover the syllabus. So again, the same thing. Guys, I see a lot of you are worried. At this point of time, this is natural that I might not be able to cover my syllabus also. How shall I attempt the examination? Please understand, the complete syllabus is not required. करना है, लेकिन at this point of time you cannot, so you will not, rather you will cover the most important things. And let me tell you, उसके through भी, if you know that out of those also what all things are gonna be asked, अगर आप prepare करके जाते हो, you see the previous year questions, you see what is the trend NABARD is following, it is a good chance you'll be able to make it, ठीक है. Okay, so Mayank is asking for finance post preparation for finance post basically आप पूछ रहे हो है ना, phase 1 preparation about ES and agriculture. देखो Mayank, specific specialist post के लिए we do not provide a course as of now. So we will be able to help you for a specialist post in phase 1 and descriptive English part only, ठीक है. फिर एक और बड़े प्यारे स्टूडेंट है मेरी लगता है, आदिति. आई एम हाईली वरिड if I can make through the examination, because exam अगर August में है, I have started preparing, that exam will take place in September. I really feel exam आगे जाएगा, क्योंकि जितनी hopes है ना आप लोगों की, that exam shall not be conducted in August rather in September. ऐसे करोगे वो सच्ची चले जाएगा आगे. But nevertheless, my suggestions would be, at this point of time, there are few things you have to know. First of all, solve a previous year question of phase 1. Okay, don't worry about descriptive writing at this point of time now. Rather, focus on ESI ARD. Merit है phase 1 में और phase 2 में भी काम आएगा. As of now, descriptive writing को छोड़ दो, because in a panic mode you won't be able to do anyhow. So open the previous year questions of last year, solve a paper of quant reasoning English, so that you know that where do you stand in that. If you feel quant reasoning English ठीक है मेरे, don't worry about it. Directly go to the ARD ESI part of your examination, static. उसके साथ में current करो. On the other hand, if you feel that I'm not really good in quant reasoning English, then you have to do double effort. Quant reasoning English also you need to improve, and ESI ARD anyhow you have to do. That you must do. And when you start the ESI ARD, my suggestion would be, first try to catch up the most important chapters or syllabus, which is like most relevant syllabus के parts for static. So that once that is done, then you can cover schemes, reports, current affairs, because all these things, schemes, reports, current affairs, you have to do till examination. करते रहना है. Static एक बार करके रख दोगे, but current affairs you have to do every day. So पहले start with static, do your current affairs and do the revision of static simultaneously करते रहो, ठीक है. तो NABARD grade B की वैकेंसी आएगी कि नहीं, I cannot say. Probably it might come, आ सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकती अभी इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, दिस येलो इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. आई विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थोड़ा सा बाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टेक. Ma'am, can you clarify about books? So, can I prepare with the books material? See, Soma Sundaram and all other students, if you are looking for few books that you will refer and your exam would be clearing, it is very difficult, because एग्जाम एक बुक से नहीं होगा. देर आर मल्टीपल टॉपिक्स. बुक्स की बजाय यू हैव टू रन बिहाइंड टॉपिक्स, एंड फॉर दैट यू मे रेफर टू फ्यू बुक्स, यू मे रेफर टू समरी शीट्स. अगर आप इधर उधर से आप ले लेते हो. अगर कोर्स है तो फिर कोर्स के बाद तो कहीं जाना ही नहीं है. एवरीथिंग इज गिवन इन योर कोर्स. ओके, if you do not have a course and you're finding free content, then rather than books, I would suggest you find the PDFs, find the content that is relevant for your examination. Books में selectively few topics you can cover, right? There is no one such book. अगर even if you're preparing for next year, then also I would suggest you, rather than sticking to only one book, ऐसा करने की बजाय use books as a side source and बाकी चीजें syllabus को focus में रख के करना, ठीक है. Mohit has a question that reasoning in UPSC is of 10th level, SSC में 10th level है, NABARD में क्या level है. तो I can say very
स्मूथली इफ आई टेल यू, तो नाबार्ड में आपको बैंक लेवल का प्रिपेयर करना रहता है. यू शुड. यूपीएससी में भी 10th लेवल रीजनिंग अब रह नहीं गई है विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. सी सैट हैज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट मोहित, लेकिन बैंक लेवल का करना है. पेपर थोड़ा आसान भी आ सकता है उससे, बट यू शुड हैव इन माइंड कि मुझे अच्छे से करना है फॉर माई बैंकिंग लेवल का जो एग्जाम होता है. ठीक है. Nishit has a repeated query, कब होगा एग्जाम विल बी हेल्ड. सो एग्जाम कैन बी हेल्ड इन अगस्त. आराम से मैं बोल रही हूँ आपको हो सकता है. So these two pink queries have been answered. These are related to ESIRD. I've already covered them. Gaurav has a question. I'm working with RRB, but I'm afraid about English. I make a lot of errors. Should I go for NABARD or stick to IBPS? Listen to me, my dear friends. If you are worried about your spoken English, please do not worry. The exam is not of spoken English that you will be checked in your interview. Rather, you need to practice English, which is required for phase 1. The 30 marks English, where there are questions like reading comprehension, one word substitution, then there are antonyms, synonyms that you need to prepare. You have to be really good in that. How? Through practice. You don't need to speak English there, right? In phase 2, you need to be good in typing. You need to have a good knack of, obviously, grammar you cannot improve in one day, but now there are practice things that you can do. For example, you can read a newspaper to improve your grammar. You can do typing practice and then check it on Grammarly to see if there are grammatical errors. So only practice will help you in the written part. Do not worry about the English speaking part in this examination. English cannot be a hurdle, let me tell you. If you are really worried about English, go for then Hindi medium. Lekin only and only English should not be a hurdle. ठीक है? Is that fine? Are you now clear that you don't need to worry about the English part? Guys, I am hoping that I am really able to answer your queries. I am trying to answer the queries I have with me already, and also of the students who are here now. तो मुझे थोड़ा सा प्लीज थम्स अप देते रहो बीच में. गिव योर अटेंशन कि हाँ मिल रहा है आंसर, प्लीज. You can type here. I'll move forward only if you will tell me that yes, everything is going okay, answers you are getting to their queries. So some people are requesting here that can we rely on only EduTap videos, or can you start with the series soon? So I'll answer that. अभी मैं बताती हूँ, but I am waiting for you guys to type that are you going fine? Are your queries getting answered? Is our pace fine? ठीक है. I'm hoping you are not thinking कि मेरा आंसर नहीं हुआ question. I'm trying to take up every question. ठीक है. Thank you so much. So coming to the question that you have asked, government schemes. देखो, the government schemes and the lectures that we are providing on our channel, obviously they are really gonna help you. But I cannot say that you can rely on that lecture और पूरा पेपर हो जाएगा. नहीं हो सकता, because it's not possible for us to cover everything through the lectures of YouTube. ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल है. But of course, if you are using them for revision, if you are using them for coverage, तो काफी कुछ important cover हो जाएगा. And I've also taken up your request to come up with the series. We will definitely. Thank you so much for that. आप लोग चाहते हो हम आए, ठीक है. And with that, I'll take up the query of Raghavendra. What is the proper time for practicing descriptive? Raghavendra, that's a good question. I think I should now go to the descriptive part only. I have few queries which are pertaining to this only. Descriptive part. So I had these queries. I have purchased the course के बारे में है, how to go for descriptive writing, या how to score high, या फिर how can I get the course evaluated. देखो, as of now, if you feel that you are okay in the current affairs and your preparation is going well, ठीक चल रही है, well with the examination, you must practice descriptive writing now only. How? It should be typing
on Notepad. There is Word document in your course, course याद आ रहा है, computer. Rather go to Notepad because Word doc highlights your errors. हमें errors highlight नहीं करवाने because in paper we do not get that facility. So type on the Notepad. Whatever you read, whatever answers, whatever topics you have covered, उनको you try to write down. ठीक है? Make sure that your answer contains good content. ठीक है? अभी से कर सकते हो for till the notification comes. तब तक you can do the descriptive writing part. ठीक है? If you feel that no, I have just started my preparation, I haven't done anything, then to descriptive you should not do as of now. Then you should do after phase 1 only. ठीक है? These are the two scenarios. If you have started few days back and you feel I'll be able to catch up, then also you can do. The point is, if you have done few things related to the syllabus, if you have started current affairs, then you can go to descriptive writing. But if you are starting fresh, then descriptive writing shall not be started as of now. Pehla this. Second is, now I'll tell you that how should I write. So type on the Notepad, right? The ideal thing is those who have the course, for them we have provided model question and answers after every chapter. ठीक है? So you take the question, write an answer on the Notepad, whatever you can recall from that particular topic, go to the model answer here and then match it, that where was your answer, was it near it or not. ठीक है? पहला ये. दूसरा, get your tests evaluated. For the evaluation purpose, after every 3 to 4 chapters, we have given periodical tests. You have to submit. When you go there, a window will open where you can type your answers and submit them online. They will come to us. We will check it, the faculties at EduTap, and post it back there. ठीक है? That is the best thing that you can do. If now you do not have a course, then you will have to find out model answers. You will have to find out a lot of things, like the model questions पहले तो, that what questions, what topics, previous years कर लो. My suggestion would be RBI के previous year question कर लो. NABARD का तो 1 year का है. RBI PYQs are available, that you should do. And then refer to the model answers. That will be really good for you. ठीक है? And once your phase 1 is done, then तो on a daily basis you have to do the descriptive writing practice. ठीक है? तो that is about descriptive writing. जो questions थे. Now I'll go back again to the queries that were posted. Jaspreet is asking, ma'am, will NABARD sponsor for pursuing higher studies to grade A officers? Yes, NABARD does that. If you go in NABARD, as far as we know, when you are selected there and you want to pursue your further studies, there are few schemes, scholarship schemes through which you can study, and your study will be compensated. It will be paid by NABARD. So that is of course there. A lot of other facilities are also there. You can pursue higher studies, you can pursue some training certifications, and otherwise trainings are also imparted by NABARD to its employees. तो वो भी एक बहुत ज़रूरी टास्क हो जाता है आपका. ठीक है? बाकी higher studies, of course, you can make avail the schemes that are there as an associate. ठीक है? Thank you for the boost up that you are giving me in between. That session is going okay. Thank you. Queries डालते जाइए और please. From now on, I'll take your queries अभी regularly. One query from here, one उधर से मैं लेना start करती हूँ. ठीक है? We'll wind up the session in 15 more minutes so that all your queries are answered. ठीक है? Harshita has a question. Ma'am, if I am from agri background, will it be helpful for me to clear exam because I'm weak in quants? देखो, quant, reasoning, English is not required in this examination of a very good level. You just need to have a decent level. This I've told multiple times. I'm not repeating that. ठीक है? Okay. What is the cutoff date to calculate age, as I have completed 35 years of age? So Vijay, usually the final date to calculate is when the notification is released. So they mark it as the final date. So for the generalist, for the general category, unreserved category, it is 30, and for other categories, 3 years, 4 years, 5 years relaxation is there. The age is calculated based on the date of notification itself. So you'll have to wait for the notification, right? Again, Pooja has same question, that I'll be turning 30 in Feb 2023. Should I prepare? Yes, of course, Pooja, because first of all,
if you'll be turning 30 next year, so this year's exam, of course, you are eligible, plus due to your category you will get relaxation also. ठीक है, तो you don't think about the eligibility, rather you start your preparation. ठीक है. Okay, now I'll take इधर से questions also. Some questions are repeated, बाद में video देख लेना. I'm not taking those questions again. ठीक है जी. Khushbu is asking how to manage topics on priority. As I have already the course. So Khushbu, you should ideally get connected to a mentor. You can by posting in your discussion forum, और आप अपने बात कर सकते हो किसी से भी. Plus we have also provided how to use the course video in your course. तो आप वहाँ जाइए and there you will get the answer. ठीक है. So Corneliu has a question. What is the reserve list or waiting list in NABARD Grade A? See, waiting list is how is it made. Next question is what is the criteria. So this I want to explain you. See, in NABARD what happens is the cutoff, which is the final cutoff for the selection, is given. Let's say it is 150 out of 250. Because phase 2 plus interview marks. Phase 1, phase 2, phase 3 hota hai. Phase 1 is just qualifying. The final marks are not counted in the selection, right? Then there is this phase 2 and interview. So phase 2 is 200, interview is 50. So out of 250 marks, the final list is curated. Around 160 is the cutoff, last year's cutoff, what I can recall. So if you have got above 160, then you will be in the merit list. But if your name did not come in merit list, but it was near, then NABARD creates a waiting list. It is usually having cutoff which is around 10 marks lesser than the final cutoff. ठीक है? Which means that you were near cutoff and now you are in the waiting list. If in this cycle only few people do not join or few leave, then they will use the waiting list to get the people who were there, and they will also be absorbed in NABARD. Okay, so this is the basically logic of waiting list, that few candidates names are given and their joining comes or not, there is no guarantee. If it comes in few months, वो कुछ नहीं कह सकते. 2 months, 3 months, 4 months, it may take even 1 year. But usually if you are a waiting list candidate, the chances are high that you will be taken in the organization at the end of few months or at the end of year also. This is one criteria. How do they decide all those things? That is not open, that is up to them. ठीक है? So I hope this is clear. Corneliu, GCU, your question about the waiting list, because जो आपने पूछा है clearing final cutoff is not enough वाला चीज is like not related to it. There are two separate things. One is the final list, and waiting list only comes if you had the marks near, and there's a separate cutoff for that, right? Then Akaprava has a question that are the PDF notes from NABARD Grade A printable in NABARD Grade A course? See, the summary sheets are downloadable. The concept notes and videos are not downloadable, but of course summary sheets you can download and use them. Even current affairs magazines are downloadable. Okay. Then Simran has a question. I'm reading the summary sheets. I think this I have already answered, that if you have lack of time, then you can refer to summary sheets directly, but ensure you do not miss out video. So either video or concept notes should be there along with the summary sheet. Only summary sheet will be difficult. ठीक है? Correct तो जा रहे हो आप. ESI as well as ARD practice writing model question ठीक जा रहे हो सिमरन. Current affairs have answered. ठीक है? So I think most of the questions have been answered. Now if you have anything left, please ask me. The students out there in the chat, I'll take up your questions. And then we can wind up the session. Acha. Now I'll start taking questions from Madhusudan. Ma'am, decision making कैसे करें? तो Madhusudan, decision making के लिए you must see the paper कैसा था. Then there is like decision making के लिए एक book होती है under the management, principles of management करके TN छाबड़ा की, वहाँ से decision making you should ideally do. And practice करो फिर decision making की, like theories हैं, कुछ types of decision making models हैं, वो सब पढ़ने होते हैं आपको. ठीक है?
Miss Bhardwaj is asking about the main schemes document and schemes tab. Miss Bhardwaj has a course, that's why she knows these terminologies. So Ms. Bhardwaj, you are asking that should I refer main schemes document or schemes tab? You need to refer to schemes tab only as of now. No need to go to main schemes document, because everything that is in news related to a scheme is covered in that monthly document. So cover the schemes tab from past 9 months. That is my suggestion. At least from January you should start doing, and refer that only. No need to go to main schemes document. Everything required is there in schemes tab. Rinku is asking, can I do the preparation of IBPS and NABARD hand in hand? See, Rinku, there is a difference in the preparation, as if because the quant reasoning English that we are talking about, you really need to have good command over those in IBPS. While quant reasoning English will help you here, that you will not have to prepare separately for them, but ESI and ARD are separately to be covered. So those two subjects you have to cover separately for the NABARD examination. So of course you can do, if you can do the time management, and depends that how easy you are finding or how difficult you are finding those two subjects. Rumpa, my dear, you are asking, I am not done with current affairs, although I am done with static. Will I be able to clear the examination? Listen, my dear friends, current affairs will never be complete. Till your examination, till 1 week before the examination, you will be doing current affairs करते ही रहोगे. तो I'm sorry, तो वो तो करते ही रहना है. Do not worry about it. Just focus on revision. I do not support that you read only. It will not help. Read, revise, and practice through quizzes. So read, revise, practice is the ideal formula that you can utilize. Then Sunil is asking, can we give NABARD Grade A and Grade B together? Yes, you can give these two exams together, Grade A and Grade B. You cannot give a specialist post of Grade A too. Then Grade A and Grade B आप दे सकते हो. Kamal, as of now we do not have any test series. I'm so sorry for that. Notification की बातें हमने कर ली हैं. I'm not repeating that again. I'm sorry. Manisha, Manish, 56% you have in your post graduation. Am I eligible? See, as per the notification as of now, you have to have 55% in your PG. So you are eligible. Also, your graduation marks are 60%. So you see, the higher marks will be counted. The higher degree marks will be counted. Lakshmi, I'm sorry, I won't be able to tell this answer. That is crèche facility provided to the kids of NABARD employees. I cannot answer that. I'm not sure on it. But there's a good work-life balance in NABARD. Like if you are a working a working person who is a mother also, so those things are taken care by NABARD. नोटिफिकेशन की बातें नहीं करेंगे ज़्यादा. सेबी की नोटिफिकेशन की तो बात बिल्कुल नहीं करूँगी अभी मैं. ठीक है. Still Bird is asking, I have made a study plan and फेज़ 2 की टेंशन हो रही है अभी. सी मत लो टेंशन अभी. फेज़ 1 की प्रिपरेशन अच्छे से करो. मीनवाइल whenever you get time, try to do the descriptive writing, at least few answers, like once in a week you should type few answers, 4-5 answers, so that you have that confidence कि हाँ चलो मुझे आंसर लिखना आता है. Once your phase 1 is done, like the gap of 45 days, 50 days you will get in between phase 1, phase 2, 45, 60 कितना भी days का हो सकता है. On those days regularly on those days you will have to do regularly descriptive writing. अभी के लिए इतना फिक्र मत करो. ठीक है. कॉम्बो ऑफर की बात हो रही है तो वो आपको आता रहेगा. मैंने बताया भी नाबार्ड का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है that you guys can use. राघवेंद्र इज आस्किंग हाउ मच मार्क्स विल बी गिवन फॉर अ डिसेंट आंसर. के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? देखो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, बट व्हाट आई कैन टेल यू 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था तो उसकी जो कट ऑफ थी इट वाज अराउंड 22-23 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए. तो दैट आई कैन टेल यू दैट रादर देन डिसेंट मार्क्स वो हम कट ऑफ की बात करें तो दैट मीन्स 25 से तो ऊपर ही लेना है आपको, राइट. तो 4 क्वेश्चंस यू आर डूइंग, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज यू हैव टू स्कोर मोर देन 6 एवरी क्वेश्चन में. तो 15 मार्क्स हो या 10 मार्क्स हो, मैं ये कह सकती हूँ आपको.
तो यू शुड टारगेट दैट यू शुड गेट आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस, 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो यू शुड बी एबल टू गेट रियली गुड मार्क्स, लाइक 6-7 तो एवरेज आने ही चाहिए आपके 10 वाले में से, और 15 वाले में से 10-12 पे टारगेट कीजिए. Anubha, if you are graduated, you can appear in this examination only if your result is already announced. तो if your result is not yet announced, then it will be difficult for you. ठीक है, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा. रिजल्ट आ गया है तो ऑफ कोर्स यू कैन. Okay, so I'll take up the last question from chat and then 2-3 questions from my sheet and then I'll wind up. तो last question इधर आता है, टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए. देखो टाइपिंग स्पीड ऐसे वर्ड्स पर मिनट तो मैं नहीं बता सकती आपको, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू गेट अ टाइम ऑफ 90 minutes to attempt this paper, and in 90 minutes span में you have to type 2000 words. तो वो प्रैक्टिस आपके लिए आइडियल है. दैट 2000 वर्ड्स आइडियल है. यूजुअली यू टाइप लेस देन दैट, बट 2000 वर्ड्स इन 90 minutes से लेस में करो, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल्सो. सो यू शुड हैव अ टारगेट दैट अराउंड इन 75 minutes or 80 minutes, 75 to 80 minutes, you are able to type 2000 words, so that then you can revise also what you have written. ठीक है, तो दैट इज द टाइपिंग स्पीड. अभी और क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ लिस्ट में से कुछ रह गया हो तो. Jane Joes is asking that where I get your monthly magazine. So Jane Joes, that is a part of our course only. Magazine is not available separately. Aditi is asking that notification will come not in July, rather late होगी September में. तो देखो Aditi, I again say that these are rumors. I cannot assure that paper कब होगा, notification कब आएगी. What I can assure you, what I can definitely guide you on is your preparation. वो मैं करने आई हूँ. तो my suggestion would be do not worry about the notification. Rather plan वही है, preparation steps वही है, उसको follow करो. स्टैटिक पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. नोटिफिकेशन लेट आएगा तो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर देना, साथ में प्रैक्टिस अच्छे से करना. जल्दी आ जाएगा तो टाइम वैसे ही कम है आपके पास. ठीक है. श्रेया हैज अ क्वेश्चन. आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, माय स्पोकन इंग्लिश इज टेरेबल. ये मैंने बता दिया है. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश. चूज हिंदी एज योर इंटरव्यू लैंग्वेज, और फेज 1 फेज 2 में तो जस्ट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. Acha, I'll take up Aditi's question that I am confused about cutoff. See, the preliminary cutoff, if you see, there is the separate cutoff from the merit sections. That means हर section में से आपको you have to get attain minimum marks. ठीक है. And finally out of 100 your cutoff will be decided. तो GA ESI ARD में से सबसे ज्यादा मार्क्स लेने हैं और बाकी सेक्शंस में एक डिसेंट स्कोर लेना. I'll show you the cutoff if I can. Give me a second please. I'll try to find out if I can for you. NABARD cutoff result. नहीं, NABARD result I wanted to know. Let me see if I can find out for you. NABARD, let's see. It will be good for you. ये डर रहेगा ही नहीं कट ऑफ का. सी, सो दिस वाज द प्रिलिमिनरी कट ऑफ द ईयर 2021. दिस इज अवेलेबल ऑन नाबार्ड वेबसाइट. देखो इसे ध्यान से देख लो प्लीज अच्छे से. देयर आर 8 सब्जेक्ट्स. ठीक है, ये वाले T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8. आउट ऑफ these 8 GA ESI ARD T6 T7 T8 मेरिट सेक्शन है. ठीक है, तो सेपरेट कट ऑफ आएगी इस मेरिट सेक्शन की विच वाज फॉर अनरिजर्व्ड 53. बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू गेट मिनिमम ऑफ दीज मार्क्स हर सेक्शन में. रीजनिंग में 3.75 वाज द कट ऑफ. आई एम टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व्ड, बाकी की उससे कम है. इंग्लिश में आउट ऑफ 30 11.25. कंप्यूटर 3.25 आउट ऑफ 20. कंप्यूटर क्वांट एप्टीट्यूड 5 आउट ऑफ 20. डिसीजन मेकिंग 1.25 आउट ऑफ 10. GA 3 आउट ऑफ 20. ESI 4.50 out of 40. ARD 6.50 out of 40. So this you had to get at least in these subjects. If you did not get this marks, like one mark was also less, then you did not qualify. But if you got all these marks, then you had to clear a separate cutoff together for GA, ESI, ARD. This is what we call as merit sections. So ESI, ARD are actually your merit sections, right? So this is what you need to target, that a decent score, like around 40% of the total score जो है 20 हर सेक्शन का जो मार्क्स है उसमें से 40% यू शुड टारगेट के इतने आने चाहिए, और 100 मार्क्स वाले में से तो जितने आ जाएं कम है आपके. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड.
आई थिंक ये मेरी सारी क्वेरीज आंसर हो गई हैं यहाँ पे. क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज ऑलरेडी टेकन. तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी एल्स तो लेट मी नो. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बीइंग विद मी हियर एंड asking your queries, boosting me up that I'm answering right. So thank you so much for your precious time. I know your time is very important. I wish you all the very best to all the lovely candidates out there. ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. बहुत काम आएंगे आपको जो वीडियोस वी आर प्रोवाइडिंग. एंड अगर कोई क्वेरी रह गई है, आपको लगता है इट हैज़ नॉट बिन आंसर्ड, आई हैव प्रॉमिस्ड विद यू टू कम for Ask Me Anything every Thursday at 6 p.m. And for that you have to go to the Google Forms given in the description of this video. वहाँ जाकर आप अपनी query type कर सकते हो. You can put in your query. I'll definitely address it next time. Right? प्लीज कमेंट कर दोगे वीडियो पे तो वहाँ आंसर करना थोड़ा मुश्किल है. इट्स बेटर दैट यू फिल इन अ गूगल फॉर्म, राइट? एंड दैट्स इट. आई विल वाइंड अप द सेशन. मीनवाइल इफ यू हैव एनीथिंग लास्ट थिंग टू से और टू आस्क, प्लीज डू. ठीक है, तो दैट्स इट. शैल आई वाइंड द सेशन? थैंक यू सो मच. सी अभी जो रह गए हों क्वेश्चंस, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यू कैन हमें गूगल फॉर्म में डालो फॉर द AMA सेशन. अगर मेल पे रिप्लाई चाहते हो देन यू कैन ईमेल अस एट hello@edutap.co.in, राइट? देन वी विल रिप्लाई ऑन ईमेल ऑल्सो. तो आई विल वाइंड अप दिस सेशन गाइज, वेटिंग फॉर अ लास्ट बाय फ्रॉम योर एंड. I really hope you found the session useful and mention कर दीजिए comments में if you want to say anything. And that's it from my end. ठीक है, तो ठीक है guys, bye bye, take care and I'll see you soon.